Hello students, welcome back to Maths Made Easy. And from today onwards, we are going to start the much awaited 10th standard ICSE session. Okay, so मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि 10th standard क्यों और कितना important है, वो आपको जैसे जैसे टाइम बीतेगा समझ में आ जाएगा. So let us start without wasting any time with our first chapter of 10th ICSE, that is 22nd chapter. अब हम 22nd से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे स्कूल में ऐसा होता है कि when you move from your 9th standard to 10th standard, so they continue with the chapter of trigonometry that is there in the 9th, and they continue. Once they finish it of 9th, they immediately start the trigonometry of the 10th standard, because basic concept and the first exercise of 10th standard trigonometry is similar to the 9th standard ka topic. Okay, so this is the reason we start with the 22nd chapter. Most of you will be having for your first exam, first monthly test. Okay, so let us start. So let us start with understanding the name of the chapter. तो chapter का नाम क्या है? Trigonometry identities. Trigonometry का मतलब क्या है? Now, trigonometry मतलब त्रिकोण. त्रिकोण means a triangle. Okay, a right angle triangle. Trigonometry, metry, that is nothing but taken from the word geometry. So basically it's a geometry of a tricone, that is a right angle triangle. So trigonometry can only be used in a right angled triangle. Now let us see right angle triangle mein we have how many sides. So of course in a triangle we have 3 sides, but right angle triangle का हर एक साइड का नाम होता है. अब कुछ बच्चे इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एंड बेस, बट आई विल एडवाइज यू कि फॉर्मूलाज जो है ट्रिग्नोमेट्री के, रेशियोज जो है, उसको आप परपेंडिकुलर और बेस के बेसिस में याद रखने से अच्छा है ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज एंड एडजेसेंट साइड, ये 3 चीज आप याद रखो. ओके, सो क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में मैंने काफी बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देखा है, सो आई डोंट वांट यू टू बी कंफ्यूज्ड. सो व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज? सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो दिस इज 90 डिग्री. ओके, अब अगर ये 90 है तो बाकी के 2 एंगल जो होते हैं वो होता है एक्यूट एंगल. So this angle will be an acute angle, and this also will be an acute angle. Acute means less than 90 डिग्री. सो ये एक्यूट को एक सिंबल देना होता है, तो हमने यहाँ सिंबल, हमने इन द सेंस द टेक्स्ट बुक ने, दिस चैप्टर ने एक सिंबल यूज किया है थीटा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज थीटा. थीटा इज नथिंग बट अ सिंबल यूज्ड फॉर एन एक्यूट एंगल. तो जहां थीटा होता है उसके सामने वाले साइड को हम बोलते हैं ऑपोजिट साइड. ओके, अब ये थीटा कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और ये यहाँ भी हो सकता है. सो अकॉर्डिंगली आपको उसका सामने वाला साइड लेना है. सो उसके सामने वाले साइड को ऑपोजिट बोल दिया, और 90 के सामने वाला साइड हमेशा सेम कांस्टेंट वर्ड होता है उसका, दैट इज द हाइपोटेन्यूज. सो साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एज द हाइपोटेन्यूज, और थीटा के सामने वाले साइड को ऑपोजिट बोलेंगे. बचा क्या? बचा ये वाला साइड जिसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड. Okay, so based on this concept, we are going to study the 6 trigonometrical ratios का formula. So basically कितने ratios होते हैं? 3. There are 3 main ratios of trigonometry. The first is sine, which is, प्यार से हम उसको बोलते हैं साइन, दैट इज sin. बहुत जन उसको sin बोलते हैं, बट ये sin नहीं होता है, इट इज साइन. सो साइन थीटा. ओके, साइन थीटा. नाउ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो इसको याद रखना है हमको. साइन थीटा इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. अच्छा, साइन के बाद क्या आता है? साइन के बाद आता है कि कोसाइन थीटा. कोसाइन थीटा, कोसाइन को प्यार से हम बोलते हैं कॉस थीटा. ओके, कॉस थीटा. सो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? इट इज एडजेसेंट साइड. इट इज एडजेसेंट साइड. Let me erase this triangle. We will draw it afterwards. Sorry. Adjacent side. Cos theta is adjacent side upon hypotenuse. Cos theta is adjacent side upon hypotenuse. The next one is the tan theta, which is actually, the name is tangent theta. Tangent theta. So it is tangent theta. So tangent ko we call it as, in short, tan theta.
सो tan थीटा का एक्चुअल फॉर्मूला जो है वो है साइन डिवाइडेड बाय कॉस. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग. बट साइन क्या है? साइन का फॉर्मूला हमने अभी अभी क्या लिखा? हमने साइन का फॉर्मूला लिखा ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. करेक्ट. द होल डिवाइडेड बाय कॉस का फॉर्मूला हमने क्या लिखा? हमने लिखा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. अब ये जो अपॉन हाइपोटेन्यूज है दैट विल गेट कैंसिल. And finally, what we get opposite side upon adjacent side. Opposite side upon adjacent side. So these are the actual three important ratios of trigonometry. So let us understand it much better with the help of a right angled triangle. So here is a right angle triangle. Any random right angle triangle. One angle is 90 degree here. ओके, लेट अस नेम दिस ट्रायंगल एज एबीसी और एक थीटा बना देते हैं यहाँ. सी में नहीं बनाएंगे क्योंकि वो बहुत कॉमन है. तो व्हाट आई वांट इज यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. Normally, students think that the standing line is always the perpendicular and the sleeping line is always the base. Okay, so but when the theta is moved, the perpendicular and base are also moved. So if you can't identify that, it's better to learn in terms of opposite side and adjacent side. Okay, so now let us find the ratio of sin theta. तो ऑपोजिट मतलब हमको देखना है थीटा का सामने वाला साइड. उससे पहले हम ये 90 के सामने वाला लिख देते हैं. ये हो गया हाइपोटेन्यूज. ओके, तो थीटा का सामने वाला साइड क्या है? बीसी. सो ऑपोजिट साइड है बीसी. अब एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, तो बाजू वाला इज दिस. सो एडजेसेंट साइड इज ए बी. सो साइन थीटा क्या हो गया? बीसी अपॉन ए बी. ओके, नाउ कॉस थीटा. कॉस थीटा का फॉर्मूला इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. Okay, we will go sin theta. So what is sin theta? Opposite side. So theta का opposite side क्या है? Theta का opposite side है BC. So we will write here BC. Hypotenuse क्या होगा? Hypotenuse हमने लिखा है 90 के सामने वाला, that is AC. So hypotenuse is AC. So sin theta is opposite side upon hypotenuse, that is BC upon AC. Let us come to cos theta. Adjacent मतलब बाजू वाला. This is adjacent. So this is the opposite side and this is the adjacent side. So adjacent is AB and hypotenuse remains same AC. Similarly, tan theta. Theta का सामने वाला side BC. Theta का बाजू वाला side. Adjacent is the बाजू वाला side, that is AB. So these are the three trigonometrical ratios. Okay. Now, बाकी के जो तीन है वो इसी तीन के रेसिप्रोकल है. जैसे कि fourth one is cosec theta, that is cosecant. It is actually the name is cosecant, which we call it as cosec theta. And cosec theta is nothing but the reciprocal of sin theta. तो sin का उल्टा cosec theta, ऐसा याद रखने का. तो the formula also goes ulta. Okay, so that means that the formula for cosec theta, what is the formula for cosec theta? Cosec theta is nothing but ulta of sine, that is hypotenuse upon opposite side. Hypotenuse upon opposite side. Similarly, the fifth one, okay, cos का उल्टा क्या है? That is secant. Secant, which we call it as sec theta. Sec theta. It is the ulta of cos theta. So formula also goes ulta. Sec theta is equal to hypotenuse upon adjacent. Hypotenuse upon adjacent. Last sixth one, that is tan का उल्टा, is cotangent. Cotangent. Cotangent, जिसको हम बोलते हैं cot theta. So cot is ulta of tan theta. 1 upon tan. So इसका फॉर्मूला भी उल्टा जाएगा. जो tan का फॉर्मूला है opposite upon adjacent, उसका उल्टा is adjacent side upon opposite side. So these are the 6 trigonometrical ratios. That is sin theta, opposite upon adjacent. You should remember the formula. Cos is adjacent, sin is opposite upon hypotenuse. Cos is adjacent upon hypotenuse. Tan is sin upon cos, which is opposite upon adjacent. Cosec theta, इसका याद रखो कि sin का उल्टा है. Okay, then sec theta, cos का उल्टा है. Cot theta, tan का उल्टा है.
Okay, understood? Now let us move forward to solve the sums. Now before we solve the sums, we should know the trigonometrical identities. तो यहाँ तीन आइडेंटिटीज है, मेन आइडेंटिटी तीन है, उसको ही ट्विस्ट करके बाकी के आइडेंटिटीज बनाए हैं. तो ये तीन चीज आपको याद रखना है. द फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी. ओके, अब इसमें ट्विस्ट करके हम क्या क्या बना सकते हैं. देखो, अगर हमने प्लस कॉस स्क्वायर को आरएचएस में भेज दिया तो हमको फॉर्मूला मिलता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर. अगर हमने साइन स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेज दिया तो साइन चेंज होगा, हमको मिलेगा कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर. तो ये पहले फॉर्मूला से ही हमने बाकी के दो फॉर्मूलाज भी बना दिए हैं. So basically this is the main formula that you should remember. Okay, moving forward to the next formula, that is the sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. So this is the main formula you should remember. अभी इसको ट्विस्ट करके हम क्या क्या कर सकते हैं. हम tan को इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में. तो हमको मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये हो गया हमारा नया फॉर्मूला. अगर हम इसमें 1 को ये साइड लेके आएंगे तो हमको क्या मिलता है. हमको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा equal to sec square theta minus 1. Okay, so the first formula mein sec was alone in the left hand side, then 1 was alone, and then tan was alone. So like this we get the different type of identities. The main is this, that is sec square theta equal to 1 plus tan square theta. Moving forward to the last identity, that is cosec square theta. Cosec square theta. Cosec square theta equal to 1 plus cot square theta. 1 plus cot square theta. इसमें अगर हमने ट्विस्ट कर दिया, cot को वो साइड लाया, तो हमको मिलेगा cosec square theta minus cot square theta equal to 1. ओके, अब हम एक काम करते हैं, हम कॉट को अकेला रखते हैं. हम 1 उधर लेकर गए लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमको मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा. द मेन फॉर्मूला इज दिस, कोसेक इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. ओके, नाउ one of the easy way to remember these three identities is, the first one you can remember it as sine square plus cos square equal to 1. The next you can remember as sec square minus tan square theta equal to 1. The next you can remember as cosec square theta minus cot square theta equal to 1. So just remember the relationship, and also remember that only one identity we have in plus and the next two identities are in minus. Okay, so now how to use these identities. So let us move forward to the exercise. So here we are going to solve the first exercise, exercise 22A. Okay, now exercise 22A, that is to prove LHS equal to RHS. So the first question here is cosec A plus 1, the whole divided by cosec A minus 1 is equal to 1 plus sin A डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन. अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं. मेनी स्टूडेंट्स ना, बहुत बच्चों को ये डाउट होता है कि हमको समझ में नहीं आता है कौन सा आइडेंटिटी यूज करें और किस तरीके से एलएचएस को आरएचएस में लिखा है. सो बिफोर वी सॉल्व दिस, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव टू टेल यू ऑल के आईसीएससी काउंसिल में अगर आप एलएचएस और आरएचएस को दो अलग अलग तरीके से सॉल्व करके फाइनली बोलते हो कि दोनों इक्वल है. सपोज मैंने एलएचएस सॉल्व कर दिया, एक आंसर आ गया, फिर लेकिन वो आरएचएस नहीं है, फिर मैंने अलग से यहाँ आरएचएस लिखा और कुछ तो एक आंसर आया और ये दोनों आंसर मैच हो रहे हैं, और फिर मैंने लिखा कि therefore LHS equal to RHS. So this type of method is not accepted by the board, 10th board council. तो हमको करना क्या है, हमको LHS सॉल्व करके RHS लास्ट में लेकर आना है, या RHS सॉल्व करके LHS लास्ट में लेकर आना है. ओके, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे. अच्छा, कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई करें, इसका जवाब सवाल में ही छुपा है. हमको देखना है राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए. तो राइट हैंड साइड में हमें चाहिए साइन.
लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, हमारे पास है cosec। क्या हम cosec को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? सो द आंसर इज यस, हम कर सकते हैं। cosec का उल्टा साइन होता है, तो चलो करते हैं। ये हमने लिखा cosec का स्टेप, ओके, सॉरी LHS का स्टेप। अब इसको सॉल्व करेंगे। cosec is nothing but 1 divided, cosec is nothing but 1 upon sine plus 1 as it is. Then again the next cosec is nothing but साइन का उल्टा, सो 1 अपॉन साइन माइनस 1। अब यहाँ हम इसको एलसीएम लेंगे, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं। तो हमको मिलेगा 1 प्लस साइन इंटू 1 दैट इज साइन ए, द होल डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम दैट इज साइन ए, देन द होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, द होल डिवाइडेड बाय साइन ए। अब यहाँ हुआ क्या, दोनों डिनोमिनेटर सेम है जो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमको मिलेगा 1 प्लस साइन ए divided by 1 minus sine A, which is equal to RHS. It was so easy, isn't it? We got LHS equal to RHS. Finally, we will be writing, therefore, LHS equal to RHS, hence proved. So we'll continue this exercise 20A. You can see in your textbook, there are in total, kitne sums hai, kitne sums hai? There are in total only 39 sums. So we will be solving 50% of it. If you want me to solve any special sums, I will pick the sums randomly on difficulty level, and those type of sums where when we check the paper, we get common type of mistakes. Okay, so by that time, you have to solve this, you have to practice this. And if you have any doubt, you can ask me in the comment box. If you have not yet subscribed, kindly subscribe. And if you have liked and understood, share with your friends, because Gyan baatne se badhta hai. See you in the next lecture soon. Till that, happy learning. Bye. Bye-bye.